So good morning to all of you. जो मन सब online रे अच्छे पिले connect ही जाओ मुझसे तो so that we will start our today's set. Our today's set is OABC prelim test 29 अच्छी. Okay. समीर फर्स्ट वेरी गुड मॉर्निंग. उमेश एग्जाम कब होगा सर? एक्चुअली आई एम ऑल्सो नॉट श्योर केबे एग्जाम होबो बट मते लागुची कि ए कोविड तो हेई सरी आसिलानी तो सब तो रिलीज हेई सालानी मे बी नेक्स्ट मंथ को फेब्रुआरी की मार्च बेलू हेई पारे बट ता तो गाइडलाइन थिला सेप्टेम्बर ना अक्टोबर रे करिवार थिला प्रीलिम टा बट जेहेतु कोविड जोगु तो लेट हेइची देखा जाऊ आगु कोन होउची बट गोटे कथा कहि बेले उमेश just keep on practicing. Don't leave from your study to deviate हुआनी because एग्जाम श्योर हबो. ओके एग्जाम हबो पोस्ट बाहर माने एग्जाम हबो तो जस्ट जेते भी डिले होउची भी तुम भी गोटे बेनिफिट रही परथबो कारण तुम मोर प्रैक्टिस कर परथबो आ सबले जानछो कि द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू परफॉर्म. ओके तो गोटे सेही हिसाब रे माइंड रे रखो कि नाही मते एग्जाम रे बहुत भलो करियर अछि तो जेते डिले होउची मो पाबी सेते भलो तो गोटे पॉजिटिव थॉट नै कि चलो एमिति भी बहुत सारा एग्जाम रहउची आईबीपीएस देछि उमेश आईपीएस अछि एसबीआई तो एसबीआई देथिलो कि आईबीपीएस आगो अछि एसबीआई रो प्रीलिम टा गला पियोर तो जेमिति प्रिपरेशन करूछो से टाइप रो करूथो डिबेट होने. ओके तो एग्जाम तो हबो नोटिफिकेशन बाहर माने ऑनलाइन अप्लाई हेच माने एग्जाम श्योर हबो. ठीक अछि तो समीर चलो स्टार्ट करिबा. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस कर दबा. आज फर्स्ट देछि कॉम्प्रिहेंशन देछि. ओके कॉम्प्रिहेंशन टिके क्विट कर जिबा क्विट करबन तो बर्तन फॉर द टाइमिंग आगे अदर क्वेश्चन को जिबा बिकॉज़ फर्स्ट क्वेश्चन करिया माने डेफिनेटली इफ पीपल स्टार्ट फील बोरिंग तो देखिबा बर्तन क्वेश्चन 9 रु आसीबा. बैड बॉस मॉर्निंग सर वेरी गुड मॉर्निंग बॉस वेरी गुड मॉर्निंग. ओके चलो समीर उमेश बॉस आउ पिले नियर अबाउट 6 स्टूडेंट्स आर वाचिंग नाउ आउ वाला अदर सब स्टूडेंट्स को माने अच्छे पिले जल्दी जल्दी करेक्ट ही जाओ मो सहित वी विल स्टार्ट. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9 टू 13 हमें स्टार्ट कर दबा. तो क्वेश्चन नंबर 9 रे देखा दैछि पिले पर्टिकुलर कोन दैछि ना each questions below there are three statements अछि. Each statement has pairs of word or phrases that are highlighted किछि word phrase दैछि. From the highlighted words or phrase select the most appropriate word. Okay तुमको most appropriate word select करिवार अछि then then from correct then choose the best option. तावन suppose 9 रो फर्स्ट ऑप्शन यदि ए थिबो ताहले देखियो एठी ए अछि कि ए की थपर देखला आर धरे ए हला तो एठी भी ए अछि तो एई टाइप रो मैच करिवार अछि. तो लेट्स स्टार्ट करिया. तो क्वेश्चन नंबर 9 रो फर्स्ट ऑप्शन जल्दी जल्दी आंसर दियो बिले. तो क्वेश्चन नंबर 9 रो फर्स्ट ऑप्शन दैछि ही इज wrapped और ही इज wrapped. तबरे कोन तो कोन हबो बिले डिस्कस कर दियो क्वेश्चन नंबर 9 रो. हो कहि दोछु बिले देखो एठी. तो फर्स्ट देखो गोटे दैछि wrapped देला. ए रैप टा कोन ना हमें रैप टा हमें को सेंस से नहीं परिबा ना रैप टा को हमें ओके
रैपटा तमे रैप वर्ड जानथिबो रैप माने का को बुझिबो कवर करिया को बुझाइबो किछि सब रैपिंग कर दबा कवर कर दबा को बुझाइ तो रैप रो इटा कोन आस परिबो ना आर रेफर्स करिबो टू कंक्लूड सेंस रे यूज करि परिबो कोन कर परिबो टू कंक्लूड सेंस रे यूज करि परिबो तो रैप्ड अप भी देछि देखो एठी ଗୋଟେ अप वर्ड देछि फ्रेज टा हिज रैप्ड अप माने टू कंक्लूड करि पारो कि टू फिनिश करि पारो कि टू समराइज करि पारो ओके टू समराइज करि पारो whereas RAPT a raptor means refers करिवो very interested काकू रेफर्स करिवो very interested को बुझेबो क्लियर आ कोन रेफर्स कर परिबो enthusiastic को बुझेबो क्लियर तो देखो wrapped up टा हमकु कोन रेफर्स करछि ना wrapped up टा पर्टिकुलरली फ्रेज टा अछि दैट मींस कंक्लूड और फिनिश को रेफर्स करिवो तो एई जगह हम ताले कोन कर परिबो तो एठी फर्स्ट टा ए आसी जीवो तो फर्स्ट एटी ए आसीबो ए रैप टा एप्रोप्रिएट नुहे तापर देइ देखो सम ऑफ द अफ्रीकन इमिग्रेंट्स से कहै छी कि सम ऑफ द अफ्रीकन इमिग्रेंट्स समे 9 और डी डी हो देखिबा एटी टिके इमिग्रेंट्स देला और इमिग्रेंट्स देला फ्रॉम इंडिया सम ऑफ द अफ्रीकन इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया देखो इमिग्रेंट्स माने का को जायता ना पर्टिकुलरली अ पर्सन हु कम्स फ्रॉम अदर कंट्री देखो particularly a person who comes from other countries तो immigrant माने का को रेफर्स करिबो ना person who comes from other country person who comes from other country तो देखो एटी from देछि माने इंडिया रो आछि माने जे इंडिया रो अफ्रीका को जाइथिबो ताको कोन कहजिबो immigrants कहजिबो मन रखिलो ना नै ताको तमे कोन कहइबो immigrants कहइबो आयग गुड मॉर्निंग सर वेरी गुड मॉर्निंग आयंग तो एठी कोन देखलो इमिग्रेंट कोन होचे पर्सन हु कम्स फ्रॉम अदर कंट्री बट इमिग्रेंट होची के ना पर्टिकुलर द पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री जे निजो कंट्री छाड़थाय ताको इमिग्रेंट्स को जाय सॉरी इमिग्रेंट्स को जाय जे अदर कंट्री आस्ता ताको इमिग्रेंट को जाय थाय तो एठी एठी ताले कोन हेबा फ्रॉम देछि माने इमिग्रेंट हबो इमिग्रेंट क्लियर तो ही वाज शॉक्ड टू हियर that her mother died of cancer from cancer someone molecule died of a disease disease रे यदि मरिबो ऑफ करे छै बट died from a cause हे परिबो died from तमे कहि पर died from snake bite हे परिबो died from किछिटा own हे परिबो माने किछु गोटे रीजन जो यदि मरि गेला died from हबो बट disease रे मले died of हेता एक्सीडेंट रे मले die in हबो die in an accident okay what a desire को रेफर्स करले और strong desire को die for someone die for something को रेफर्स कराइ छबो ओके तो आर सब तो आंसर ए आसीबो तो आंसर बी आसीबो क्लियर तो 9 रा आंसर हम कोन करि परले 9 आंसर ए करि परले तो अमृता देखता सर एग्जाम केबे हबो ओएससी प्रो ओके अमृता आज किछि नंबर उमेश भी से कथा कहउतले ऑलरेडी एबे तो रिलीज एबे तो ग्रेजुअली सब तो ओपन होची तो जेहेतु एटा ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव रे रहिछि ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव रेफर्स जेतु रहिछि तो मे बी किछि आई थिंक आउ मासे दे मास परे से किछिरा गाइडलाइन आनि के एग्जाम करैबो आ वर्तमान भी आईबीपीएस चलिछि एसबीआई भी चलिछि तो आगो के सब एग्जाम अछि ता पय प्रिपेयर करथा आ जेते लेट भी होछि तो मन रखो कोड पॉजिटिव वे भाबी कि चलो आगो को बिकॉज़ नथिंग इज इन आवर हैंड हम हाथ तो किछि नै जहाँ भी करिवे गवर्नमेंट ही करिवो गवर्नमेंट जहाँ डिसीजन देबो ताकू ही हमको फॉलो करिवार अछि ठीक अछि तो ओरी हबार नै अमृता ऑनलाइन एप्लीकेशन मींस फॉर्म पड़ी छी ऑलरेडी नोटिफिकेशन रे डेट मेंशन थिला डेफिनेटली एग्जाम हबो पोस्ट भी बाहर छी तो तमे केवल डिविएट होनी पाठ ऊपर कंसंट्रेट करो ओके तो डेफिनेटली सक्सेस हे परबो ठीक अछि तो चक्रधर दास ऑफलाइन क्लास केबेटु हबो सर ओके चक्रधर ऑलरेडी हमें तो स्टार्ट प्लान ही जाई छी कि 14 जनवरी रु स्टार्ट होउची ओके 14 जनवरी रु स्टार्ट होउची तो आउ बाकी फॉर क्लियर इंफॉर्मेशन इशू इंफॉर्मेशन तो वाणी वेबसाइट रो आबै नै पाइ परिबो ठीक अछि बट 14 रु वी आर रेडी टू स्टार्ट आवर ऑफलाइन क्लासेस ओके 14 जनवरी ठीक अछि तो नेक्स्ट को जिबा पहिले क्वेश्चन नंबर 10 को जिबा जल्दी जल्दी पहले आंसर दे दियो क्वेश्चन नंबर 10 रो a lot of a few कोड आइ परिबो a lot of or few guests came to see him this evening
he is popular with his friends on account of his complacent and complacent. Okay, more or much तो बर्तन देखी दो पिले फर्स्ट टू छोटो कर देखा this is discussed in more and much detail देखो this is discussed in much and more detail. First thing much टा कौन पिले ना much टा होची positive degree एटा positive degree बुझेइबो और more टा काहा को रेफर्स करे comparative degree. तो तुम्हें जानथिबो कि more टा केतल बसिया दरकार ना more टा more डी ओके more टा comparative पाई और much टा positive degree पाई. तो एठी मार्क करो this is discussed in dash detail in a later chapter. In a later chapter माने परो chapter रे दिया आइछि परो chapter रे दिया आइछि माने definitely ए बात एठी कोन अछि डिटेल को रेफर्स करछि in much detail in a later chapter हबा ना more detail in later chapter obviously कुछ comparison sense रे यूज आइछि तो comparison पाई ही करा होछि तो एठी हम कोन कर परिया more टा most appropriate हे परिया in more detail something in more detail you will find this concept in more detail in next chapter. Clear? तो एई टाइप रे कंपैरिजन सेंस में ठीक तमे कोन कर परिबो मोर को यूज कर परिबो. तो सेकंड क्वेश्चन के देखिबा he is popular with his friends on account of his complacent or complacent. तो एठी देखि दबा पिला आर मीनिंग कोन आस परिबो COMPLAISANT. ए complacent means का को रेफर्स करता है polite को रेफर्स करा जिवो और showing respect को रेफर्स करा जिवो polite और showing respect को रेफर्स कराला polite और showing respect को रेफर्स कराइ छबो बा willing to do what pleases other जहां कोनु खुशी लागतो सेही टाइप रो काम करे इच्छा करबा. तापर आ गोटे देछि देखो complacent means का को रेफर्स कराइ छबो that means रेफर्स कराइ छबो कि self satisfied को बुझेबो that is self satisfied. clear? तो समीर 10 रो ई करूछो समीर भूलवाल हे जाउछ बहुत देखो एठी कोन हे परिबो ताले हम आंसर ताले कोन करि परिबा 10 रो देखो एठी द he is popular with his friends on account of his dash nature. ता को नेचर हे परिबो सबले संग रेस्पेक्ट दोथबो तो रेस्पेक्ट रे पई पोलाइट नेचर पई हबो ना सेल्फ सैटिस्फाइड नेचर पई निजे खुशी होबे पॉपुलर हबो कि एटा गोटे नेगेटिव वर्ड ते रेफर्स करा जबो एटा कंप्लासेंट माने निजो को सैटिस्फाई हो तो अपाथेटिक भी नहीं परिबो अन्य पाई कोनसे फीलिंग्स नथिबो निजो पाई ही केवल सैटिस्फैक्शन होतबो. तो कंप्लासेंट ता नेगेटिव वर्ड एटा को वर्ड नेगेटिव वर्ड एटा को वर्ड पॉजिटिव वर्ड. तो तमा कोन पे पॉपुलर रहबो पॉजिटिव नेचर पे नेगेटिव नेचर पॉजिटिव नेचर पे तो कंप्लासेंट हो परिबो तो एथि भी ए हे परिबो आर भी ए एटा भी ए. क्लियर? तापरे पूजा फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग and 10D रेफर्स करूचो पूजा 10D रे एसी त ए आ ए अछि देखिनबा डी रे भी ए अछि ए रे भी ए अछि. तो बर्तन देखिए ऑप्शन ए और डी भीतर गोटे चूज करबा. ए लॉट ऑफ गेस्ट कम टू सी हिम दिस इवनिंग देखो ए लॉट ऑफ गेस्ट कम टू सी हिम इन दिस इवनिंग. तो बर्तन मु कोन करि परबी कि कम टू सी हिम दिस a few guests came to see him this evening. Okay. तो बर्तन देखो ओके एई जगह रे a lot of देछि a few देछि lot of guests भी परियो a few guests भी परियो came to see him this evening. Okay, a few guests तामन देखो एठी जेहेतु आगु एठी अदर किछु वर्ड देइनी तो एई जगह रे लॉट ऑफ जदी कहबे लॉट ऑफ गेस्ट केम टू सी हिम दिस इवनिंग हे परिबो अ फ्यू गेस्ट कहले बहुत कम लोग आसिले इवनिंग को रेफर्स कर परिबो. तो ए आज पर दिस सेंटेंस देखिया गलो ए लॉट ऑफ भी एटी करेक्ट हे परिबो फ्यू भी एटी करेक्ट हे परिबो बुझबाचो. बट जेहेतु ए कोनसी सेंटेंस देइने आगो किछु वर्ड देइने तो हम पॉजिटिव ने जाय लॉट ऑफ ता नबाट बेस्ट हे परिबो. तो एठी गोटे ऑप्शन रे एम्बिग्युइटी क्रिएट हे जाउची. ओके तीरा एम्बिग्युइटी क्रिएट हे जाउची दैट मींस देखो एठी फर्स्ट तो आमे जानले कंप्लासेंट हबो एठी मोर हबो ताने एठी भी ए आछे एठी भी ए आछे. तो तुमे यदि एठी लॉट ऑफ नबो भी ठीक हबो फ्यू हबो भी ठीक हबो. तो एठी क्वेश्चन आंसर रे दीटा कंफ्यूज आंसर हो जाई छी ए भी ठीक हे परिबो डी भी ठीक हे परिबो बुझबाचो ना नहीं ए भी और डी भी ठीक हे परिबो. पूजा योर आंसर भी तमे ना चाहे राइट करि परिबो और ए भी ठीक हे कारण बहुत सारा लोक आसिले हे परिबे
कम लोक आसिले भी हे पारे अ फ्यू गेस्ट केम टू सी हिम दिस इवनिंग दीटा को ठीक हबो तने एई दीटा भीतर आंसर हबो ओके नेक्स्ट कुछ आबिले क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो पिले आंसर दवा ପାଇଁ पूजा समीर अमृता चक्रधर अमृता बैड बॉस उमेश तुमने के बोले ना हो ना कौन ओके हो जदि अच्छो प्लीज जल्दी जल्दी आंसर दे दियो क्वेश्चन नंबर 11 रे आंसर दियो तो क्वेश्चन नंबर 11 रे आंसर कौन है पहले जल्दी कह दियो प्ले वी कोड डिस्कस कर दो देखिया से कहूँ कि वी कोड डिस्क्राइब और डिस्क्राइब मींस कौन है परिबो और डिक्राइब मींस कौन है परिबो देखो डिस्क्राइब मींस होची डिस्कवर करबा कौन करिया को बुझेबो डिस्कवर डिक्राइब मींस होची कौन हबो कि टू ब्लेम करिया को बुझेबो कहा को डिनाउंस करिया को बुझेबो टू डिनाउंस और अर्पिता ऑफलाइन केबे स्टार्ट हबो चलो समस्त कैरियर ऑफलाइन के स्टार्ट हवा बहुत शीघ्र स्टार्ट होउची जेमति मु एबे कहतली 14 जनवरी टू स्टार्ट हवार तो हमर ऊपर डिसाइजन है आइची जदि किछि भी चेंज किछि होउची तो मको इन्फॉर्म आइची ओके बट 14 जनवरी रो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू ब्लेम रहला टू डिनाउंस रहला ओके डिक्राई ओके तो डिस्क्राइब मींस होची डिस्कवर डिक्राइब मींस होची ब्लेम और डिनाउंस तो बर्तमान देखो एठी we could तले एठी कोन हे परिबो we could dash only a traveler in the bleak evening गोटे ट्रैवल ओनली अ ट्रैवलर इन द ब्लेक इवनिंग गोटे संध्या हमें कोन कर परिया वी कुड हमें एठी कोन कर परिया डिक्राई कोन ब्लेम करिवो ना डिस्क्राइब मींस का को बुझेबो डिस्कवर करिया को बुझेबो तो वी कुड डिस्कवर ओनली अ ट्रैवलर हमें केवल डिस्कवर करि पाले तो एटी एटा करि परिबो 11 सी नेचर ओके समीर तो फर्स्ट तो ठीक असला ए आसिया देखिया तापरे तो प्रिंसिपल इम्प्रेस upon the student impress on or upon our right impress upon the student we want to purchase cloth for a shirt and trousers yes eta be appropriate हे परिबो तो सी समीर your answer is correct सी हैला तो एठी बोले गोटे कांसेप्ट देख दियो पिले क्लॉथ और क्लॉथेस भीतर डिफरेंस कोन क्लॉथ मींस होची कोन ना तुमे क्लॉथ मींस होची पीस ऑफ क्लॉथ को बुझेबो कपड़ा को बुझेबो जोते जेमति तब सपोज तुमको कॉटन रो पैंट शर्ट करिवार अछि तो तुमे ऑफ मार्केट गला तुमे क्लॉथ रो मींस कॉटन रो क्लॉथ हंडो कॉटन क्लॉथ हे पारे कि नायलॉन क्लॉथ हे पारे कि तुमे यदि सिल्क क्लॉथ हे पारे एटा बुझेबो क्लॉथेस ता बुझेबो कोन ना गारमेंट्स को बुझाए गारमेंट्स मींस रेफर्स करबे कोन शर्ट और ट्राउजर्स को बुझेबो तो तुमे गोटे शर्ट और ट्राउजर्स करिवो गोटे शर्ट और ट्राउजर्स पे एप्रोप्रिएट नहे तो वी वांट टू परचेस क्लॉथ फॉर क्लॉथेस जोटा बुझे शर्ट एंड ट्राउजर्स को क्लॉथेस कर परिबा ठीक अछि तो नोटी क्लॉथ करिबा तो आंसर 11 सी राइट आंसर पूजा डी करिबनी डी रे देखो द प्रिंसिपल इंप्रेस्ड विथ द स्टूडेंट्स व्हेन ही इंप्रेस्ड ओपन हबो स्टूडेंट्स माने ऊपर इंप्रेस हेले आ एठी डिक्राइड बे एप्रोप्रिएट डिक्राइड माने कोन कहिछि ब्लेम करियो बुझेइबो आमे गोटे संजरे ट्रैवलर्स को देखिया को डिस्कवर कलो ना ब्लेम कलो डिस्कवर कलो तो सेति में एठी आंसर कोन करिवो ए बता देखो 12 आंसर हे जाऊ बिले जल्दी को समय 12 आंसर कोन हे परिवो 12
ओके तो देखो ये 12 रे कौन कहिछि फर्स्ट देला कि zeal देला और jealous देला jealous एटा पिला कौन zeal बा enthusiastic को बुझाइबो enthusiast zeal एटा देखो अगर zeal माने enthusiastic आ एटा एटा कौन jealous जो रेफर्स करता है ये jealous माने कौन envious को बुझाइबो ईर्ष्या को बुझाइबो ओके 12 A कहले समीर तो देखियो एठी he won the election only because of the support he got from his dash party worker the party workers माने ईर्ष्या बना enthusiastic थे zealous सब A आसिला तो 12 A करछ ओके A टा ठीक हैला you must reconcile yourself myself हवन you must reconcile yourself को बुझे you पाई yourself हवा ठीक हैला even if the sky is overcast I take my raincoat with me देखो even if टा contrary पाई यूज वे तो contrary जेतरा sky आकाश रे overcast हेतियो मेघ हेतियो जदी even if लागि थांता ताले एठी मु रेनकोट नै न थांदी ताले नेगेटिव अर्थ हेतले एटा जदी एटा पॉजिटिव थिबो एटा नेगेटिव होबो एटा नेगेटिव थिले एटा पॉजिटिव कारण even if टा contrary पाई यूज वे तो even if एटा अप्रोप्रिएट ना whenever तो बी असला तो राइट आंसर समीर 12A absolutely right okay 12 is नेक्स्ट कुजिबा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी आंसर दे दियो I think slow टिके रोज बता जी नेट so that कारण एक्चुअली बहुत कम्युनिकेशन गैप तुमरा मो भीतर बहुत रह जाउ जाजी I think near about 4 to 5 minutes वाला रोज बता ओके जनरली हमरो एटलीस्ट 1 minute रो गैप रहे 1 minute भी होनी 50 सेकंड 48 to 50 seconds रो गैप रहे सब बड़ा माने मो मेसेज तुम पाखे पहुंचे तुम मेसेज मो पाखे आसी आवे बट आज मते के लागो छी बहुत गैप रहउची ओके तो ठीक अछि तो नेक्स्ट को देखब ले क्वेश्चन 13 समीर आंसर कोन हो जल्दी को आई थिंक यू आर एक्टिव नाउ पूजा 13 रो आंसर कोन हो जल्दी कह दियो यस 13 रो आंसर जल्दी को So Vijay has bought 2 pens and each and every pen is black. Vijay has bought 2 pens. Each and every pen is black. Dala. Each and every ratio. तुम्हें each कोड यूज करिबा every कोड यूज करिबा सबले मन रखिबो. Each टा में कोड यूज करता हो और every कोड यूज करता. No doubt एटा each और every परे हमें सबले कोन बसेइबा गोटे सिंगुलर नाउन टे बसेइबा. कोन बसे सिंगुलर नाउन ही बसेइबा. Each boy हबो every boy हबो. But each quote and every quote मन रखिबो when there is a definite number in your mind जेतबेले each टा definite number को रेफर्स कराइथिबो देखो when a definite number is in your mind जेतबेले गोटे definite number टे रहिछि definite number in the sense माने मु कहि परिबि कि देखो मु कहि परिबि each student of your batch कोन आसला is student of your batch पूजा 13 रो बी देइछो हो देखिबा टिके गोटे मिनट देखिया is student of your batch should work hard the कोन कहली is student of your batch should work hard here देखो तुम बैच रे केतना स्टूडेंट अछि तुमे जानिछो that means definite number हैला 30 रहले 40 रहले 500 रहले कि 1000 रहले तो तुमे जानिछो कि तुम बैच स्टूडेंट केता अछि तब here you can use each but जितेबेले मु कहबे when there is no definite number मु definite number mention नाही गोटे indefinite number को बुझेबो indefinite को रेफर्स कला
तो indefinite refers करियो सेटा हमको every student should work hard कौन कहली देखो every student should work hard अटे जो आ माने कौन आसला every student should work hard माने एटी रेफर्स करछि तुम जेते सब स्टूडेंट रहिले प्रत्येक स्टूडेंट वर्क हार्ड करबे एई जगह मो माइंड रे नाही कि केतेटा स्टूडेंट बट एठी मु जानि कि मो बैच रे केते स्टूडेंट तो इज टा डेफिनेट केस बाय एवरीटा इंडेफिनेट केस रे बट सब बेले मन के गोटा को बुझेबे पूजा 13b देला समीर 13b देला सौरभ 13a देला ओके तो देखि नेबा तो एठी ई टू पेन दे दीटा पेन रो इच ही हबो तो एठी a आसिला तो ठीक अछि a a ताने a b d भीतर गोटे चांस अछि easy काटा there is no hope of breakthrough in the murder case देखो ब्रेकअप तो जानछो पिले come to an end को बुझेबो breakthrough माने डेवलप और प्रोग्रेस मु कहि परिबे कि मर्डर केस रे कोछि भी प्रोग्रेस हेई पार नाही तो प्रोग्रेस पाई कोन करबे ब्रेक थ्रू करबे ता माने एटी डी भी कटियो बी भी कटियो ब्रेक थ्रू ए आसीबो we must usually give our servants the old clothes which are cast away means का को रेफर्स करतिबो abandon cast away means का को रेफर्स करला एटा गोटे फ्रेज टे जा माने abandon को बुझेइबो ओके छाडी दे जा को हम परित्याग करतिबा जा को हम पिंधु नथे यूज कर नथिबा ताकू दे देवार अछि तो कास्ट अवे तो एठी ए हबो सौरभ योर आंसर इज राइट पूजा एंड समीर एटा बी हबो नाही 13 रो ए करबो ठीक अछि लेट्स को मूव करिबा क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन 14 देखो ओके मोस्टली रे तो क्वेश्चन 14 और 18 आसी गलानी बट तम YouTube चैनल पे तो देखे ही नाही बहुत गैप रहउछ अछि कोन भाई तुम मो भीतर कम्युनिकेशन गैप रहउछ हो 14 तो देखो बिले 14 रो आंसर कोन हे परिबो से कहूची माय मेमोरीज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी started when I had been a child and visited the university and its surrounding reach तो आरो 14 रो आंसर कोन हे परे जल्दी ले आंसर दियो बिले 14 रो आंसर कोन हे परिबो एरर फाइंड आउट करो 14b sure 14b yes कौन है पर explanation can you give the explanation 14b कौन असला my memories of Delhi University started past tense दला एटा main clause दला कौन my university memory started when I had been a child and when I was a child had been the appropriate past perfect करनी simple past कुनिया when I had been a child when I was a child Suchi Smita 14b right answer Suchi okay फर्स्ट ऑफ ऑल सुची गुड मॉर्निंग देखो इठी तो आंसर कोन करबो व्हेन आई वाज ए चाइल्ड सौरभ वाज जित भाबी ताले ठीक अछि एंड विजिटेड द यूनिवर्सिटी एंड इट्स सराउंडिंग रिच क्लियर तो इठी बीटा रहला 15 देखो इठी 15 रो कोन हे परिबो 15 आंसर कोन होबो जल्दी प्ले द आंसर द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन एशिया BHU was established in 1916 as an exemplar of academic excellence and has become synonymous with a life teeming with enriching experiences.
Yes, 15. Saurav, आंसर कौन ही पड़ेगा 15 रा? समीर कुआडे वाला? पूजा, समीर, सौरभ, सुचिस्मिता, अर्पिता, जल्दी आंसर दियो. Yes. ओके ठीक अच्छे कि आंसर देना मु दउछि. देखो इट इज द लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी. एटी देखो लार्जेस्ट देला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी. ठीक अच्छे को जगह इन एशिया पर्टिकुलर बीएचयू एटा यूनिवर्सिटी नेम पर द केबे बसैबा ना. जदि दी था तो रॉन्ग हेता था. द बीएचयू केबे बसैबा ना, ओनली बीएचयू बसैबो. ओके द बसिबो नाही. जदि द देथा ताले भूल हेता था. वाज एस्टैब्लिश पैसिव रे देछि केबे 1969 as an exemplar of academy. Exemplar or example এটা ঠিক আছে, কিছু রং নাই. Exemplar of academy excellence and has become a বর্তমান হেই সার্চি ଗୋଟେ synonymous with a life teeming with enriching experiences. এটা কোনসি ভুল নাই. এটা নো এরর নিও. 15 এটি নো এরর পুট করো. ক্লিয়ার? 15 নো এরর. 16 करो पिले. Narendra Modi must have his party return to power in Maharashtra later this year, where the electors have voted in his favor, but the state government is run by an adversary. So, Suchis, Saurav, C कौच. C रे कौन भूल अछि मते टिके कुह. ओके सी कौन पे कहले मते कुह पिले. सी कौन पे आंसर कौच मते कुह कौन पे सी कहले. अरे सी कौन पे ले एग्जांपल एक्सप्लेन दियो. आई विल मेक इट क्लियर. तुम्हें ये हार्ड कर नौच कि जदि तुम्हें हार्ड करथो त रॉन्ग काना. एटा मु नै पारि. एटा एस्टैब्लिश हैला बर्तमान सिनोनिमस सही सारी छी. तो एटी प्रेजेंट परफेक्ट करि पारे किछ रॉन्ग नाही. ओके तो ये 15 रो सी हबो नाही, ई हबो. बट कोन पाई यदि कहउछ मते को आई विल मेक इट has become synonymous with life. तापर देखो एठी 15 रहला. 16 भी देखो. नरेंद्र मोदी मस्ट हेल्प हिज पार्टी रिटर्न टू पावर. देखो हेल्प देछि माने एठी टू रिटर्न बसिबो नै. रिटर्न रो ठीक अछि. तुमको यदि टू लगे था ताले भूल हेता था. टू बसिबो नै. मस्ट हेल्प हिज पार्टी रिटर्न टू पावर कोठी इन महाराष्ट्र केबे लेटर दिस ईयर. where टा माने महाराष्ट्र रेफरेंस होछि जो जगह इलेक्टोरेट्स हैव वोटेड इन हिज फेवर बट द स्टेट गवर्नमेंट इज रन बाय एन एडवर्सरी. तो एटा भी किछि रॉन्ग नाही. आकु भी नो एरर करो. 16 भी नो एरर ई करो. ओके 15 and 16 both are no error. Okay पिले किछि भी डाउट रहबो यदि 15 आउ 16 रे तुम माइंड को यदि किछि आछी ताले कमेंट बॉक्स रे जल्दी जल्दी कमेंट करो. लको कोन पई तुमको लागु छी को पार्ट रा एक्सप्लेनेशन आई विल मेक इट क्लियर. बट फॉर मी देयर इज नो एरर. सब कोनसी एरर नाही. 15 इज नो एरर. 16 इज नो एरर. 17 का आसीबा. वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स इंडिकेट्स दैट एन EI Nino weather phenomena was developed around the middle of the year, but presently it is too early to assess this trend. तो 17 तो बहुत ही इजी अछि. के कहि परियो जल्दी कहि दियो 17 टा कोन अछि. ओके 17 देखो पिले. वेदर फोरकास्टिंग मॉडल्स
मॉडल्स टा सिंगुलर ना प्लूरल प्लूरल तो इंडिकेट्स हम ना इंडिकेट हबो इंडिकेट्स नाही तो आर आंसर 17 रो ए तब देखो two sharpshooters of the gang have arrested in connection with a sensational road rage incident which claimed two lives in Bhawana more than a month ago. 17A, right answer? Yes, Samir, right answer 17A. 18 टा जल्दी कर दियो 18 टा 18 टा जल्दी कर दियो तो ये कौन ही परियो टू शार्प शूटर्स ऑफ द गैंग हैव अरेस्टेड ना हैव बीन अरेस्टेड एठी हैव बीन अरेस्टेड हबो ओके काना शार्प शूटर्स को अरेस्ट करा जाई छि माने पैसिव रहबो से माने अरेस्ट करि नाहंती ताको अरेस्ट करा जाई तो हैव बीन अरेस्टेड हबो ओके Sankar, first of all, good morning. 17D, D को मैं कहूँ it is too early to assess its likely strength. एटा correct अच्छी तो ये models में indicate करो 17 रो A हबो D नुहे. Okay, तो 18 रो इटे have been arrested अब. Clear? पहले आज हमारा communication gap बहुत रही होची. Okay. नियर अबाउट पाखापाखि आई थिंक 3 to 4 मिनिट्स रही जाउछि सेति आमे ठीक से कोऑर्डिनेट करि पाउ ना तो ठीक अछि तो देखो एटी क्वेश्चन 19 to 23 आसीबा समीर 18 रो सी नाही 18 रो ए करो have been arrested हबो ओके 19 देखो 19 to 23 संकल्प 18 ई नाही 18 रो ए कहि से चल तो 19 to 23 पिले रीअरेंजमेंट सेंटेंस स्टेटमेंट देखो एठी कोन ही पड़छि ओके 1923 पिले देखो एटी रीअरेंजमेंट कर देखो एटी कोन ही पहले तो ऑर्डर टा से कहछि देखो एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस एज material reality is born in an invisible realm beyond space and time a realm revealed by science consists of energy and information what would the facts be like if we had them they would be as following okay तो देखो everything that we experience first of all देखो it refers to everything that we experience as material reality if we had that would be as following okay तब that would be as following तो refers करछि से सब गुडी का तळे फॉलो करूछि that means एटा को हमें फर्स्ट सेंटेंस नहीं परिबा काना एग्जांपल क्वेश्चन से बुझेगा किंतु एटा को डेफिनेटली आसे तो सब सेंटेंस करना ट्राई करछि the invisible source of all माने एठी कोन रेफर्स करियो invisible source of all एठी देखो टाइम रहिला स्पेस रहिला साइंस रहिला एनर्जी इंफॉर्मेशन रहिला ए सब पय हमें नहीं परिया त ए परे हमें कोन करबे सी आ देखो बी ए सी अन परिया कहना व्हाट वुड द फैक्ट्स बी लाइक कोन भी फैक्ट्स सही पारे जहां को हम रखिथिले ई जदी हम रखि थानते दे वुड बी एज फॉलोइंग कोन एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस कोन एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस एज मटेरियल रियलिटी ओके तापरे कोई चीज टाइम कथा कहला स्पेस कथा कहला साइंस कांसेप्ट कहला तापरे द इनविजिबल सोर्स ऑफ ऑल दैट exists is not an empty void but the womb of creation itself तापरे कोन स्पेरी वर्ड
it turns the invisible source of all এবারে এই সোর্সটা মানে এইট আসিলা তো it turns the chaos of quantum swoop into the stars, galaxies, rainforests, human beings, thoughts, emotion, memories, and desire. Something creates and organizes. It turns the chaos of quantum swoop into stars, galaxies, rainforests, human beings, and our own thoughts, emotion, memories, and desires. Something creates this energy. Okay, okay, okay. Just wait. Turns the chaos into memories and desire, and our own thoughts concepts of into stars. Something creates and organizes. Okay. এই যে দেখি আর পিলে টিকে গোটে মিনিট ରୁହ ସେ କହୁଛେ everything that we experience as material reality is born in an invisible realm ଗୋଟେ invisible ଦେଖା ଯାଏନି space and time and this invisible source ମାନେ a ପରେ c ଆସିଲା ଗୋଟେ clear ହେଇଗଲେ invisible realm ତ invisible source a ପରେ c ଆସିଲା ତାପରେ something creates and organizes this that exists born creation itself it turns the chaos of it turns man invisible source ଆଉ d ତା ମାନେ a c e d ଆଉ first ଟା b ଏଇଟା ବଡ ବୋଲେ b a c e d ओके तो एटा ऑर्डर हबो appropriate b a c e d नेक्स्ट को चला पहले क्वेश्चन 24 ରୁ 30 को जीवा क्वेश्चन 24 30 एडी कोन देछि देखो ट्वेंटी फोर थर्टी आई थिंक तुम स्क्रीन में आसला नहीं कि 24 ରୁ 30 क्लोज टेस्ट अच्छे हाँ आसीगला बताओ आंसर दियो 24 टा कौन हो पारे ओके second first question देखो we are also looking at dash our agriculture we are also looking at dash our agriculture growth रावण growth looking at पाखरे कौन करे looking at growth of our agriculture दिखाई था तो ये growth appropriate नुहे looking at dash our agriculture improving देश initiating माने start को बुझियो threatening तो appropriate नुहे rob loot करे बुझेबो तो ये improving करो तो ये कौन करे improving our agriculture आज एग्रीकल्चर कौन हो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अपन रैम्बल ना रिहैबिलिटेशन एम्प्लिकेशन ना कोले तो तुम्हें जो रिहैबिलिटेशन माने का बुझेबो आउ थरे थैथान दवा को बुझेबो और रैमिफिकेशन तो भला जानछ कि रैमिफिकेशन का को रेफर्स करता है ना दैट मींस गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बुझेबो
complex or unwelcome consequence of an action को बुझेगा ramification माने ଗୋଟେ complex नहीं पारिबा और ramble तो ଗୋଟେ work को refers करता है और pleasure work तो एठी कोन हबो agricultural production हबो बिले एठी 25 pro कोन करा ए लिया 24C नुहे initiating we are also looking at initiating our agriculture initiate माने start हबो ना हम agriculture improve करियार अछि initiate माने step नबा beginning को बुझेबो कि step नबा बुझेबो तो agricultural production as this dash to one two ଦେଇଛି results of हबो comes to हबो नहीं culminate हबो नहीं तो आंसर कोन करि परिबो leads to तो 26 ର आंसर तमे कोन leads to नहीं परिबो as it leads to कोड नहीं परिबो leads to an overall improvement in socio-economic condition of our farmers okay we are dash practice of rotation so we are dash the practice of rotation the cropping system we are incorporating now we are including now we are going na securing na sense incorporating माने include को बुझेबो तो ए जाय we are dash the practice of rotation माने incorporate करिया add करिया को बुझेबो including माने कोन जे already included है छि incorporate माने to include को बुझेबो का को include करिया को बुझेबो तो इते we are incorporating the practice of rotation तो हमें rotation crop को include करछन्ते को सिस्टम रे ना क्रॉपिंग सिस्टम रे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर dash high value and low volume crops in ଦେଇଛି ନା with हबो ना for हबो ना towards हबो ना upon हबो तो एठी आंसर कोन होई परिबो एग्रीकल्चर कोन पय ना अधिक गेन पय towards कोइ पय towards high value एठी towards करो high value काना आउ एठी कोनसी प्रपोर्शन अप्रोप्रिएट ना इन माने रे with माने सहित for माने पाय upon माने का ऊपर then हमको agriculture towards ना high value and low volume crops and value addition तब देखि being a dash state ता माने को state है परियो major state देला populous state देला surplus state देला surplus माने बहुत सारा बळी थिबो multiplicity त माने होछि multiply हबने एटा उत्तर प्रदेश also offer tremendous invest agro process sector ता माने एटी जे agri and state ता ए हबने आन करो agri and कृषि प्रधान को as an agrarian state, Uttar Pradesh also offers the tremendous potential investment in agro-processing sector. We have had talks with various multinational and in the process of dash park. Process हमें को process होची agro park state establish करे आसन से तो 30 कौन कर परिबो establishing कर परिबो हम agro park के establish करिबो तो आंसर 30 टा क्लियर तम पिला सब तो क्वेश्चन डिस्कस कर देले आ पैराग्राफ डला लेट्स गो टू द पैराग्राफ को जिबा बट जहार किछ डाउट होई कमेंट बॉक्स में जल्दी मेंशन करा तुमको डाउट ता क्लियर कर देछि तो एठी देखो पिला एठी कोन रेफर्स करछि if you think your dollars are not stretching as far as the grocery store you are not imagining things the US Department of Agriculture accept agriculture expects food prices to rise 2.5 to 3.5% over 2013's price with several categories including beef, fruit, dairy, egg. It has been harder. Okay, and it is no different at the gas station where prices at the pump hit an average of ₹3.70 in June 2014, 13 cents higher than gas prices at the same time a year. Okay. तामाने सिंपल कांसेप्ट का होची ना देखा होची कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेक्ट करची कि फूड प्राइस ता राइज करिया पाई ओके तार गोटे डाटा देची कि फूड प्राइस में सब सेक्टर में राइज प्राइस ता राइज करची ओके तापर दे देखो यू माइट हियर अ लॉट अबाउट राइजिंग इन्फ्लेशन विषय जानथु और कॉस्ट ऑफ लिविंग विषय सुनाइथु बट व्हाट डू दिस टर्म्स रियली
mean a term कौन actual अर्थ करे, and most important, how do they affect your daily life? People often use the phrases cost of living and inflation as if they were synonyms. माने cost of living inflation एमती use करे in this is synonyms, but actually they are same नुहंती. They are not the same, although closely related. ना same ना related अछंती. Inflation is a big picture. As the cost of goods and services rise, inflation कौन है? Cost good और service cost rise हुए. The buying power of the dollar falls. Dollar ର value ଟା कमी जाता है. The inflation rate is often measured by the CPI. Inflation rate टा का द्वारा measure होगा? CPI द्वारा. A monthly measure by Bureau of Labor Statistics that average the cost of representative basket of goods and services from areas around the country. That means inflation rate and I would call like monthly measure by refers monthly measure by our inflation rate quite same habo nahi. Cost of living and inflation बहुत ही different अछंती. Okay. तापर refers करछि देखो. It then reports the result as a percentage rise or fall. Cost of living on the other hand is more focused picture. Cost of living टा बड़ा focused picture main point को बुझाउछ cost of living. This number averages the cost of an accepted standard of living that includes food, housing, transportation, tax and healthcare. Cost of living is frequently used to compare life in different locations around the country of the world. For example, if you made 50,000 per year living in New York City, you could maintain the same standard of living in Chapel Hill and see on half of the annual salary. The cost of living in New York City is twice as high as Chapel Hill. तमन से कहा कथा कि যদি $50,000 তুমি নিউইয়র্ক রে স্পেন্ড করছো তাহলে তোমাকে মেইনটেইন করিয়ার আছে अदर জায়গা भी মেইনটেইন করিয়ার আছে. ওকে লাইক द চ্যাপেল হিল রোড एग्जांपल দিছি. তারপর দেখো it is easy for most people to feel the effects of cost of living increases in their daily life. कोन ना बहुत सारे लोग फील करछन्ते कि कॉस्ट ऑफ लिविंग रे इफेक्ट इंक्रीज करछि तांको डेली लाइफ रे. But rising prices hit the lower and middle class especially hard. जो price टा rise करछि middle class और lower class people माने सफर होछन्ते. Higher food रहिला, gasoline रहिला, utility cost mean less money remains once the necessities are paid for. माने बहुत सारे नेसेसिटी जिंस को पेमेंट कर साला पर आ तांको पाई मनी बहुत कम रहछि. Leaving little for savings तर नाही उठने और discretionary spending. माने तांको फ्री रे जो स्पेंड करिया କଥା तेमान पाई सेति अवेलेबल होई पर नाही. To compensate for the rise in prices, consumers tend to buy less. तांको compensate करिया पे कोन दरकार होची ना consumers माने कम किनिबार अछि, switch to less expensive, कम एक्सपेंस करिया अछि, जो लाइक substitutes or drive further to find bargain. आउ कोन कर पारे ना bargain भी करिया କଥା ए समय रे. जेतो मिडिल क्लास माने लोअर क्लास माने सफल होचंदी सेति भाई कहचंदी कि मानो पाखरे कोन स्टेप नै परिबे ना पर्टिकुलरली से माने कोन करबे कंज्यूमर्स में कम किनिबे और दैट टू बी कोन कर बार्गेन करि परिबे बा कोन से एक्सपेंसिव सब्स्टिट्यूट को नजर मानिबे. तार को जी स्पेशली डिफिकल्ट टू कीप अप विद द राइजिंग कॉस्ट माने राइज कॉस्ट बढ़िया सो तो मैनेज कर मानी कॉस्ट व्हेन योर पे चेक इज नॉट ग्रोइंग एट अ सिमिलर रेट. जब तुम चेक तो ग्रो करो था बट प्राइस बढ़ चलतो. अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो of labor statistics, the Indian weekly earnings for full-time wage earners was $780 in the first quarter of 2014, unchanged since last 14 years. So last year, although the CPI has risen 2.1%. पहले इटा CPI concept देला से बोलची कि Bureau of Labor Statistics कौन कहले full-time wage earners $780 थिला first quarter रे सेवानो मतलब किछि last year के change हेलानी जदि CPI कौन कहछि 2.1% बढ़े. तब कोई देखो you would assume that higher inflation means higher price of real estate. तुम assume कर पारो कि higher prices for real estate means higher inflation, and that is often the case. At least at the start of significant spike in inflation, so I can increase in inflation, but then things can get complicated. तापर things कौन है complicated here. To keep inflation rates under control, यदि हमें inflation rate को control आया अच्छी, the Federal Open Market Committee often steps in and raises the federal funds rate. तो कौन करेगा अच्छी ना आगू को स्टेप नंबर अच्छा फेडरल फंड रेट को बढ़ेगा अच्छी which is the interest rate charged to other financial institutions जोटा कि हमें other financial institutions interest rate charge कर परिबा
as the cost of home loan goes up, যেহেতু home loan টা বড়ি চালুଛି বা home loan ର cost টা বড়ি ଚାଲୁଛି, many consumers are squeezed out of the market। ତ ବହୁତ ସାରା consumers ମାନେ market ରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, leading to a slowdown in home sales। slowdown ବି selling of home down भी slow होଉଛି। with homes on market for longer period, sellers tend to drop their asking price to attract buyers। Although economic recovery is far more complicated than any single factor, lower interest rates have helped the devastated lower interest rates have helped the devastated housing market। Devastated means completely damaged or destroyed market begin its slow recovery since 2008। মানে 2008 ରୁ recover হওয়া পরଠାରୁ ସେଟାକୁ ପୁରା devastated ବା damage କରିସାରିଲାଣି। with pay increasing lagging behind ମାନେ ପଛରେ ପଡି ରହିଛି ବା fall କରୁଛି। lagging behind rising inflation, you can expect your wallet to continue to take a beating as the cost of living increase just about every aspect of daily life। ଯେହେତु ତୁମର daily life ର ସବୁ price ବଢି ଚାଲିଛି, then ତୁମକୁ ସଫଳ ହବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି। but try to keep your eye on the long term ପାଇଁ ତୁମକୁ ନଜର ରଖିଥାଅ ବା ଗୋଟେ vision ରଖିଥାଅ। although you may need to cut back spending in some area, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ। don't let today's high prices discourage। ତ ଆଜିର ଯୋଉ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଅଛି ତାକୁ ଡିସ୍କରେଜ କରନି from saving for tomorrow's need। ମାନେ ସେଭିଂ ତୁମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, discourage you ମାନେ don't let today's high prices discourage you। ମାନେ ଆଜିର ଯୋଉ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଯେ ତୁମକୁ ଡିସ୍କରେଜ ନ କରୁ କାଲିର ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତାମାନେ ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି କି ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେ ବି ହଉନା କାହିଁକି ଆମକୁ ଫୋକସ ରହିବାର ଅଛି, ଆଉ ଆମକୁ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି ନା ସେଭିଂସ ଉପରେ କରିବାର ଅଛି, ଯୋଉ ସେଭିଂସ ଟା ଆମକୁ କାଲି ଯାଇକି ବା ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଇକୋନୋମି ରିଲେଟେଡ ପ୍ୟାସେଜ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ୟାସେଜ ଥିଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 1 ର आंसर କଣ ଦେଇଛି ଦେଖି ନେବା। What is the food price decided by the US Department of Agriculture by June 2014? प्ले सेमिति किछि मेंशन करनी, तो इठी it is expected as no, एटा मेंशन करनी प्ले, it is none of this करे बेस्ट होगा। It is expected average 370 in June 2014, से प्ले मेंशन करनी, तो leave it। People often use cost of living and inflation as synonyms। What do you think? They are same, very much related? No. Cost of living are big, inflation is the cost of goods? No. They inflation is the big picture as the cost of goods and services rise for buying and services rises। cost of goods na pile eta cost of living there, the cost of living there is often measured as the bill of labor study that actual cost of no, so it is none of this correct। two answer ko none of this correct। according to the passage which statement is false, पछे कोडा false पिले ना false देखो देछि the cost of living in New York City is thrice as high as in Chapel Hill। एटा पिले बिल्कुल ही नुए, काहे कि ना देखो एते से कहिछि कोला चैपल हिल you could maintain the same standard of living in Chapel Hill if you made $50,000 per year living in New York City, you could maintain the same standard of living in Chapel Hill। माने तमाने से कहया कथा कि तुमे 50,000 जदि अर्न करछो ताले तुमे चैपल हिल रे मध्ये रही परिबो on half that annual salary the cost। माने चैपल हिल रे तुमे तार कम सैलरी रही परिबो, तो the cost of university is twice as high as in Chapel। twice देछि से कोन रेफरेंस करछि, ट्वाइस देछि कि थ्राइस देछि। ओके, तो आंसर तुम कौन कर परिबो, ट्वाइस थिले ही परथांता बट थ्राइस देछि पड़ला जगह रे। हां, इफ यू लिविंग थ्राइस देला तो एठी केते होबार अछि, ट्वाइस होबार अछि, तो एटा ही रॉन्ग होला। एटा तो आंसर सी। तापर देछि देखो एठी how could we keep inflation rates under control? आमे inflation rate केमि कंट्रोल आनि परिबा ना फेडरल ओपन मार्केट जी स्टेप किछ रहबो तो कोन देछि, द फेडरल ओपन मार्केट often steps and raises the federal funds rate charge to other financial institution using a federal reserve bank। तो एटा नै परियो, सी नै परियो, तो फोर आंसर कोन करो सी। according to the passage which one is false, कोडा पिले false सही परियो। तो देख परियो homes on the markets available for smaller period, sellers tend to drop asking price to attract buyers। एटा पिले false टा अछि, एटा सी। 6 is देखो discretionary, discretion माने complete freedom सेंस रो बुझेबो, authority सेंस रो बुझेबो, तो आंसर टी कोन कर परिबो, तो पछे छी सेम वर्ड देछि freedom, तो degree of freedom।
डिसकाउंटेंस माने बुझ पाछ रिफ्यूज टू अप्रूव समथिंग एटा कोन हे परिबो रिफ्यूज टू अप्रूव डिस्को 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 थे गई डिस्को जो पार्टी बा डांस पे तापर फ्रीडम जानले डिसएम्बार्क जान पाछ डिस्क्रिपेंसी डिस्क्रिपेंसी माने डिफरेंस को बुझे ओके डिवास्टेटेड माने का को बुझेबो डैमेज को बुझेबो डिस्ट्रॉय को बुझेबो ऑपोजिट रा से ऑपोजिट माने आंसर कोन हे परिबो रिकवर कर परिबो डिस्ट्रॉय करबो इट वुड नॉट कर रिकवर बिनाइन द जेंटल ओके लैगिंग माने फॉल को बुझेबो पछो को एफोर्स कर जीवो तो एठी कोन हे जो एटा ऑपोजिट वर्ड बुझे छी तो ऑब्वियसली अप्रूव माने एठी कोन कर पारे इंप्रूव कर पारे लाम्बास्ट वर्ड लाम्बास्ट माने मन रखो पले लाम्बास्ट माने क्रिटिसाइज को बुझेबो लाम्बास्ट का बुझो क्रिटिसाइज क्लियर तो ठीक अच्छे पिले ऑलरेडी हमें डिस्कस कर देले सब क्वेश्चन तो सॉल्व कर देले तो आज क्लास एठी रखिबा तो क्लास वाइंड अप करूची तो जो जो मान सब पार्टिसिपेट करथले थैंक यू ऑल ऑफ यू ओके तो विश यू वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू तो सी यू टुमारो इन आवर नेक्स्ट क्लास ओके तो चलो थैंक यू सी यू सून